Yeah, Namo Siddhanam. Jai Jainendra, everyone. And once again, welcome to Jain Heritage Center's 20th anniversary celebration. As you know, that part of this celebration on Jain Heritage, what we are doing is we are running a 10-week Jain Heritage Festival 2022. And part of our 34th session on this festival, that's what we are going to be part of. The main topic, as we know today, that the today's topic is a little different, which is the program is all about Jainism today or Jain Dharma today. If we look back on our sessions, which we have been doing so far, it is very evident that so far all the lectures, different webinars, we have been talking about Jain history, Jain heritage, rituals. But today, the session is planned to be a bit different, and it is intended to be different. The idea behind this thought that when we have been talking about antiquity of Jainism so far, but why we are talking about Jainism today. Our idea is that today, what we are living, that will tomorrow, it will be yesterday, right? Which potentially means that we as Jains should definitely talk about what is going on in different parts of the country, in with different people. So where we stand as Jains today. So that is the whole objective of this session, where we will talk about Jainism and hear different perspectives of people. If we talk about, if we just look back and see all around ourselves, right, we can very well find out that the communication is at extreme as of today, right? We talk to our friends, people, families, and our Jain bandhus, right? We discuss many topics related to Jainism over phone calls, over WhatsApp forwards. There are email groups, people are talking about it. There are Facebook groups, people are talking about it. But if we look at it, right, the discussions starts from those channels or those social channels, and then those discussion actually stops there. Is it really happening something on the ground? Possibly that is something we don't see on the social media. So the topic is very, very important to be discussed in this kind of a forum where we have people from across the globe, as what I can see, people coming from different streams, academicians, people who are working on the grassroots level for Jain Dharma, people who are working in corporates, right? And they believe and they work and they give their tan, man, and dhan for Jain Dharma. So that's what the idea we came up with, and we brought in this topic that let's talk. Let's talk what is happening in the Jain community today. Let's talk with the people who are really executing a lot of projects. They have their own initiatives they are running at the grassroots level, rather than we just only talking about on social medias, wherein lot of topics which you see maybe not relevant at all, right? So in this series today, we would like to focus on Jainism today as a topic, and in terms of the audiences, we have a large audience today, and our panelists, we will just come to that quickly without wasting any more time because we are already delayed on this session. So the point which I'm trying to make here is, which is very, very important, that today possibly we will only talk about what is happening all around it. Maybe in this forum, we are not going to discuss the solutions, right? If the problems are being talked about, maybe we are not talking about solutions today. The other thing is that we will hear from our panelists first. So we have a bunch of panelists. Shri Sanjay ji is there. We have Shri Rajendra Prasad ji, and we have Dr. Priyadarshana Jain as well with us. And we have our Nitin, who is also going to talk about Jainism today. With respect to all our panelists, I think I would request one by one, which I will come to the sequence, to talk about their perspective from the grassroots, what they think that what is happening and where we as a community need to focus. Where are the problems? What are the problems we really want to take on? What are the things which are going to
possibly have 20% effort but 80% of solutions, right? Rather than a lot of effort but tiny bit of achievements. So that with that focus, I will just kick in, and I would like to introduce first Dr. Priyadarshana Ji Jain, who is with us today. Uh, Many of us already know Dr. Priyadarshana Ji. I have never met Madam, but I heard a lot about Madam, and there is some, inspiration which I carry from there as well. Dr. Priyadarshana Jain is an academician, and she has been teaching Jainism for last over 35 years. She has traveled overseas across the globe on many Jain missions and topics. She has put in our point of views. She shared her thoughts on the status and issues of the Jain community from an academician perspective. Because if we look at it, generally, in my personal opinion as well, even today, where we see Jainism or Jain Dharma, right? We believe that Jain Dharma is only about I get up in the morning, get freshen up, going to the temple, worshipping, doing puja and everything else, and that is what is Jainism for me. What is really happening in academics from Jain Dharma or Jainism perspective is what we are going to hear from Dr. Priyadarshana Ji. Ma'am, thank you so much taking time out to put your perspective today. Thank you so much, and over to you. How much time do you give me, Mr. Yogesh? We planned around 10-15 minutes, ma'am, for each panelist. But okay, let's go on. I think we can figure it out from audience. When audience are engaged, we can take a little more time. That's okay. Okay, thank you. So it's 8:23, and I will go on till 8:40. Okay. 33:40. So if you want it Nitin want to say just something. 10 minutes also, you can tell me 10 minutes. Nitin, you are on mute. That's fine. Okay, madam. Yes, ma'am. Go on. Things. Okay. So yes, yes, madam. my order. Yes. Yeah. So I'll do my first. Tadguna, promulgator of the the knowing of reality, so that we all may realize it. There's a bit of disturbance, madam. Your voice is shaking a bit. Now, how is? Hello. Hello. I can see ma'am now. We can see her. Madam, you will have to connect to your audio, please. Your audio and video both. Maybe we may need to wait for a minute. It looks like there was possibly the network issue. Because of that, the voice started muffling first. Yeah. Probably I'll go now. Probably then. Nitin, would you like to call her to find out? I think madam might join soon. Okay. There might be some network issues. Probably we can continue with other speakers. I'm just looking. All right. So do we have got Sanjay ji or?
take over. Sanjay ji will join. Okay. All right, Nathan. So we will go to you then. While we all know Nitin, he is the executive director for Jain Heritage Centers. All of us know him very well across all these sessions. So Nitin, I'll cut short on your introduction and we'll just go on. Thank you, Yogesh. Namo Siddhanam. Jai Jinendra, everyone. So when it comes to Jainism today, it's a very vast topic, which is something which cannot be spoken within 1.5 hours. But however, it is just an attempt to understand the ground realities, what are the problems, and trying to reflect upon it. Before I start, just want to give you a bit of background about myself, wherein I have been running the website over the past 20 years, have traveled across India and also Karnataka, with my central epicenter of all my activities has been Karnataka. By virtue of having Karnataka and being in Karnataka and also working on our website, I would like to reflect upon a few of the pointers. So, for example, when it comes to the temples and the inscriptions, I think I would like to speak about that. When it comes to inscriptions, I think we have about 2,000 plus or 2,500, 2,300 inscriptions in Karnataka. We have about 700 inscriptions in Tamil Nadu and few other parts of the world. What is happening over here is, friends, though we have so many documented inscriptions, one of the biggest challenges what we have seen is the documentation of these inscriptions. I happen to travel to many places in northern India. What I've seen is, we all see the inscriptions that are there on the just below the Kirtankar idol in the main Vedi or any of these smaller Vedis, but they all know that is an inscription. Everyone says wo Shilalekh hai, but there is no attempt to see what these inscriptions are all about. But there is no attempt to understand whether these inscriptions have been documented or not. You might be feeling, why is Nitin telling so many things about inscriptions? What is the need of that? I'll tell you, friends, when we had the Salekana case, the judgment by the Rajasthan High Court, and when it went to the Supreme Court of India, Rajasthan High Court asked, give us proof of the practice of Salekana prior to independence and post-independence. That is when the Salekana related inscriptions at Shravanabelagola and other parts of Karnataka played a very pivotal role. Then, when it comes to these inscriptional studies, one thing what we have seen is, the problem what I've seen is, we just look at it only from what it is, what the details are, and we just translate it as it is. Whereas a knowledge of Jainology, trying to connect the inscriptional history to the philosophy, is what that is required. When you try to connect both of them, you'll get to know the rich heritage of Jainism. You'll be able to appreciate the Jaina way of life and other aspects. That is where it is. Whenever a student studying inscriptions should also study philosophy, which is really missing in the researchers of these times. And one other important aspect, it's not just about unearthing the inscriptions. Please also make sure you publish these inscriptions in journals which has ISSN numbers, because they become documents. They become the history of Jainism in the region. That is important. Then, one other important thing I wanted to bring it up to you guys. We have also seen the conversion of Jain inscriptions, not just the temples. If we don't document it, it is bound to happen. That is where the importance of documentation of inscriptions comes into picture. Next, another aspect which I wanted to touch upon is about the temple's renovation. Please note that Jains are a minority at the all India level and also minorities in many states. We got minority status in many states much before we got the minority status at the national level. So what happened? The reason is, I'm emphasizing on this, is we get a lot of grants from the government.
towards the renovation of these temples. And there are many trusts locally. We can connect offline and I can share more details. Please make sure you focus on the renovation of these temples. We all see about conversion of Jain temples. And a couple of our speakers will also speak about other aspects. But what is that we are doing as fellow Jains over here? We see about the temples being in ruins. If you see any details about that, please extend your helping hand. If you find any temples that are in a dilapidated state, please let us know. We are there to support you guys by connecting with the Jain Samaj. We should, as a community, we should come together. Next, whenever we get into renovation of temples, I have seen this across India, across the length and breadth of the country. You have seen the inscriptions being vandalized. They put concrete on the inscriptions. Come on, inscriptions are the living history of your Jain Samaj, practice of Jainism over the centuries, existence of Jainism. And we try to vandalize them. We try to distort them knowingly or unknowingly. That should be avoided. That is one of the threats to the existence of Jainism in the long run. Next, spoiling of idols. And you know what happens? Don't take me wrong. This is like what Yogeshji mentioned. What we are discussing here is not pointing fingers at anyone in the community or outside the community, outside Jain community. It's just trying to introspect ourselves. We have seen Jain temples being converted. We have seen Jain inscriptions being converted. We have also seen Digambar temples being converted to Shwetambar temples. What I hear from some of my friends are, अगर हमने आंक नहीं लगवाया तो भावना नहीं आता है. Come on, if it is a Digambar temple, donate the Digambar temple's renovation. Don't convert it into a Shwetambar temple, for heaven's sake. If you're distorting it, you might just feel about your bhavana. End of the day, you're distorting the Jain history. Over a period of time, they will say it is a Shwetambar temple constructed recently, and the rest of the lands related to the temple will be lost. Your inscriptions will be lost. Please think about it. We need to look at it from a wider perspective. Don't just think about what happens today. Then, when it comes to pujas, what I have seen is, we Jains always, particularly we say, ये 13 पंथी है, 20 पंथी है, जलाभिषेक है, पंचामृत अभिषेक है. Let me tell you, there are national level organizations at the all India level. What they have said is, their mandate is, please retain the Amnaya or a Parampara they belong to. If Jalabhishek is happening, let it happen. If Panchamrit is happening, let it happen. End of the day, it's a Jain deity. Tirthankar statue, which has gone through the Panchakalyanaks or the Panchakalyan. That is what we need to, just in the name of Digambar, Shwetambar Murti conversions, just in the name of Jalabhishek and Panchamrit Abhishek, we fight amongst ourselves. But some of the Muni Maharaj who come from north to south, or they're very clear. Amnaya कैसा है वैसे ही हम करेंगे, वही करना पड़ेगा. Just look at what is there. Don't try to change the system. Don't try to influence. Let's not spend time in unwanted things. Then, maybe it's not prevalent in the northern India. In southern India, we have seen, whenever we go to a temple and whenever we try to put money onto the hundi, सोचते हैं, or to the थाली, सोचते हैं 1 रुपया 2 रुपये का डालने के लिए. Whereas we go to malls and watch movies, we spend 500 to 1,000 rupees over there. We should think, if your pandits are not there, there is no one to take care of your temples tomorrow. We are already micro minorities. This is something we need to introspect amongst ourselves. Next, when it comes to history, let me tell you this. I have been telling this very often. What happens is, people, when they try to speak about history and write about Jainism,
what they do is they try to just pick up details from someone, so download from someone, cut, copy paste activities is what they do. They don't even go to the place. They don't even have the basic courtesy to give the credit to the person who's written it, who has taken the photograph. Trust me, my dear friends, many of us are people, researchers. They have spent hours together. They would have spent days together to research. They would have gone to those places. They would have done the field work and then come back and posted the best of the best images. And we want to steal their credits. And we don't even know what it is. I'll tell you one thing. There is a very important inscription at Shravanabelagoda and also at a place near Bangalore called Bukkaraya inscription. Usko hum bolte hain Bukkariya inscription. Bukkaraya kya hai? Bukkariya kya hai? And we bolte that's a 14th century inscription. Someone writes it's a 8th or 10th century inscription who manages a Facebook page or a YouTube account or an Instagram account. You might think, shouldn't we write? You write. Please verify and write. You might think, ये तो छोटी सी गलती है, आप क्यों इतना तंग करते हो? That's not what it is. ये छोटी छोटी गलतियां मिल के बड़ा हो जाता है. ये सोशल मीडिया, दिस इज द era of सोशल मीडिया का जमाना में पे है हम लोग. एवरीथिंग गेट्स मैग्निफाइड हो जाता है. इट गेट्स expanded many folds because of social media. It's easier to share. One mistake, it's difficult to erase those mistakes. Please note that. Please don't distort the history. If you don't know the history, read the books, ask people, contact scholars. Please don't write wrong history is what we have seen. And one other thing, many people say, youths are going away from the community. I'll tell you. I'll give you 2 to 3 different ways. In Karnataka, even now it is prevalent. अगर कोई, not everywhere, अगर कोई पंडित का बेटा है या बेटी है, when they look at the कुंडली, अरे ये पंडित का बेटा है, पंडित की बेटी है, हम शादी नहीं करेंगे. These are the era of intercaste marriages that is happening. Within a Digambar or within a Shwetambar, you don't want to marry within the Pandits' families. Intersect marriages. They forget Digambar Shwetambar. Even within Digambars they do, within Shwetambars they do. Do we really need this? Then our youths will go away from the community. And when youths are there, some of the youths, we say that they don't come to the religion community. But what's happening? When they are coming, when their weddings are happening, when their alliances are, proposals are coming in, people say, अगर इसको किसी ने लड़की दे दिया तो वो लड़की को जाके हर रोज मंदिर में जाके भजन करना पड़ेगा. Do we need these attitudes? Come on, they are youths who are coming to the forward to the community, but we don't. Then even when I say, like I told you, back to the Pandit ki beta, Pandit ki beti, what is happening? Their fathers, forefathers have given their life towards the preservation of a temple. Without them, we would not have been able to see those temples. But we want to say that. What will happen tomorrow? If those temples, nobody are there to look after our temples. This is what it is. Then another thing is, when there are many young researchers, maybe Priyadarshana madam will speak about it. Many youngsters, we see many youngsters in the session here, they come up with a lot of research work. The request to the donors and our big Jain organizations, come. I'll give you minimum 25 to 30 Jain research thesis work being unpublished. Please publish those. All these youngsters need is those to be published. Please get them. And we run so many education institutions at a national level. The social problems at Karnataka or Tamil Nadu is different, but at a national level, we run hundreds and thousands of Jain institutions. Why can't we employ these PhD holders from Jain community? We don't do that.
How would they come into Jain research then? We need to introspect as educationists. Then, when it comes to, like dharmshalas, particularly in South India, we hardly find dharmshalas over there. Probably that's something I've spoken in this session in the Kannada also. In Karnataka and Tamil Nadu, it's time for we Kannadigas and Tamilian Jains to start opening Bhojanshalas and Dharmshalas. If you have proper Dharmshalas and Bhojanshalas, trust me, friends, the Jain community in Northern India, they always prefer to come and have food there and stay there. We need to maintain that ecosystem. Next. When it comes to your fairs and functions, what happens? बोली लेते हैं कोई धनवान, उसको अभिषेक करने के लिए दे देते हम लोग, पैसे बाद में दे दो, वो धनवान पैसे देता ही नहीं. ऐसे बहुत सारे मंदिर साउथ में, they have gone to dogs. Gone to dogs in this, don't take me in the wrong sense. Their financial status has deteriorated. Nobody, and it's hard, in one Panchakalyanak or one Varshik Puja, if 3 to 5 lakhs of donation is assured and these Dhanvas, they don't give money, what happens? The trust will be relying on your payments to run the day-to-day or of the temple. Not many of us know this. Kya chayega? 20,000, you might say 15 people, if they take boli 3 lakh rupees. To run a temple, it requires 25,000 rupees per month. Basic, bare minimum. We need to introspect. If we cannot donate, let's not even go for the boli. Then a couple more things. Just last 2 things. It's also about the attitude we as a community we have. हम बोलते हैं ये दिगंबर मंदिर नहीं जाएंगे, श्वेतांबर मंदिर जाएंगे नहीं, but we want to go to Ganpati Mandir, Hanuman Mandir, we want to go to Balaji Tirupati every year. I've seen people, Jains, across India, who wants to visit Tirupati Balaji at least once a year, but they don't want to come to Digambar Mandir or Shwetambar Mandir. If we as Jains don't go to our own mandirs, there will be no one to look after those temples tomorrow in the long run. The temples cannot survive or sustain. These are all few points which I just wanted to bring up onto this forum, just to let people know what are the kind of problems that we should look at, that we are facing. With this, I think we have all the other 4 speakers lined up. Probably, I think I'll make way for the other speakers. Over to you, Yogesh. Thank you. Thank you, Nitinji. So I think we have got Pradeshna ma'am connected again. So I would quickly just request Pradeshna ma'am to take over. Ma'am. Hello. Yes, madam. Yes, ma'am. Sorry. There was a network issue. That's okay. Which I could not fix it immediately. No worries. I regret the inconvenience caused to the team. Sorry, I will not again do my prayer. Yes, at the outset, I would like to thank, am I audible? Yes, loud and clear. Yes, thank you. I would like to thank the entire team of, oh my God, where it is? Hello. Yes, ma'am. You are audible. Please continue, madam. Yes. I would. You are loud and clear, madam. Please continue. Please unmute, ma'am. Yes, am I audible? Yes. Please go ahead, madam. Yes. Am I visible? Am I visible to the audience? All Yes. clear, madam. Please continue. Just unmute yourself, madam. The rest all is fine.
Yes, all well. Hello. Hello. Yes, You're ma'am. clear, madam. Please continue. Yes, I cannot see my video. That's a problem We over can see here. you, madam. Please continue. Okay, fine. So I will just continue. First of all, at the outset, I would like to thank the team, entire team of Jain Heritage Centers and Nitin, especially for taking this initiative to bring this program together and discuss about the challenges that we face in promoting Jainism or even sustaining Jainism. So I would like to not go into a long lecture, but I would just like to touch upon the points here and there. What are the challenges I face in the department as a teacher, as a head of the department, as an academician? The first thing is that not many people are aware that such departments exist in the country. Like, for example, if I take Tamil Nadu, Chennai, not many people are aware, even though we send WhatsApp messages, we give the advertisements, or rather, I feel people do not want to take cognizance of these departments because of the materialistic world that we live in. Everybody wants a thick, fat salary. They want to pursue all their material goals. First thing. Second thing is, I would not say that it is a challenge. It is a very honest practice that I, in the department, promote Jainism, the Jain studies, very, very, very effectively. I integrate a lot of things. I integrate philosophy and religious studies. I integrate the ancient and the modern. I integrate Sanskrit, Prakrit, and Shwetambar, Digambar textual studies. And then we also integrate what to say, the basics of, I told you, Prakrit language, and then nature cure. And then we go for a lot of field visits, yatras, and we get a first-hand information, the ground reality, like how Jainism is spread over so many states, and how our heritage sites are, how people are. So we do a questionnaire and all kinds of empirical research we do to establish the ground reality for the students to get a first-hand information of it. So we do the every semester we try to do, or at least once in a year, we go for a field visit to different states. We have been to Karnataka thrice. We have been to Madhya Pradesh. We have been to Tamil Nadu. We have been to Gujarat 3 times, to North India. So that is how we have explored the Jain heritage that is all over India. And we take pride in preserving it, in talking about it, and showing it to our children and our visitors and our guests, whoever visits the department. So this is a very good practice that we do by going to all the Shwetambar and Digambar places. So we teach the Shwetambar Agamas, the Digambar Shastras, the literature of Srimad Rajchandra, Prakrit language, the basics of Prakrit language, and everything. I feel everybody should know everything. As far as the different branches of philosophy is concerned, the different sectarian divides are concerned, the unity in diversity we have to find out. We have to establish it among themselves. So we have students from all walks of life and all sects. We have the Shwetambars, the Digambars, the Murti Puja, and of late we have even non-Jains joining for the major papers, and we have 100 non-Jain students every semester studying different papers, and they're all appreciation for this great philosophy. And they say, madam, why don't you promote it? Why don't you? We have Christians, we have Muslims, we have Malayalis, and all people from all backgrounds, doctors, engineers, businessmen, housewives, students from the age of 20 to 70. And we have this year, because of the COVID, for the past 2 years, we are offering classes online. And we have students from US, UK, Israel. Now, this year, we have students from Israel, then Dubai, and all over India, whether it is from Assam or Delhi or Bhopal or Nepal or Mumbai or Ahmedabad, and all over from Tamil Nadu also we have. So I feel that attracting students is not a big issue if we know how to promote Jainism, how to teach Jainism very, very effectively. And all students are all praised for the efforts that we put in the department.
and I have a very efficient faculty, and all the faculty members, including me, even though we are teachers and heads of the department, we take pride in telling you that we are students of Jinmani. Even though I finished my PhD in 1997, I went for extensive studies of Prakrit and nature cure and then Paramagam studies. To date, I'm a student of Jinmani. I don't make tall claims that I'm a professor or a teacher or a HOD, because I don't teach anything. I only take from what the Tirthankars have told and I give it in my style. So this is the practice that we do. So quickly, I'll be touching upon the points. So we integrate a lot of things, as I told you, and that is why we are able to attract students. So what I feel is, in the Samavasharan, Bhagwan in his Divya Dhwani did not tell you how to manage the temples, how to manage the climate, how to manage your finances and resources, how to have relationship management, and how to take to resource management and all different kinds of health management or whatever it is. He only taught one thing, and that is knowledge management and self-management. When you know to manage yourself, your Gyan Swabhav Atma, you can learn to manage anything and everything under the sun. So in the word management, it is first learn to manage me, that is myself. Then I learned to manage other people, time and everything. So what Bhagwan preached was a very great philosophy. And if we can promote that philosophy, then only we will have takers. So my 30 years of extensive, 30, 35, I don't know, even 40 years, I'm 50 to 55 now. And I've been teaching Jainism right from the age of 15. So in this 40 years of career, I have come a long way. And every day is an enlightening day. I mean, it is a day of enlightenment. It is a day of realization. So many things we keep reading and discovering. So the direction in which we move is more important than what we do. So this is one thing. If that is not established, then we cannot really promote the real Jainism. In the name of Jainism, we will be promoting something or the other. One example that is very striking to me is that abroad in 30 universities, Jain departments are started. But more than 30 departments in the country have been closed. More than 30 departments or institutions must have been closed. The very rich Prakrit Institute, the PV Research Institute, which is right next to the Banaras Hindu University, is not able to attract people. Likewise, there are so many institutions I've visited and they really struggle to get good students. And then I share with them my experience of integrating so many things, the ancient and the modern psychology, science and everything. And whatever you teach in Jainism, you have to first fix the context. So today, if you take the context, we have multiple issues and challenges before us, whether it is at the global level or at the individual level, health issues or mental health issues, family issues, or whatever it is. So when you teach Jainism to a student, you should prepare him to address these challenges and provide solutions to these challenges. So that is what I practice in the department. And we have this year around 39 plus 20, I don't know, 55 plus students studying 3 hours every day, 2 hours of tutorials and 1 hour of assignment. They do, and they're all very, very, very happy about it. And recently we went for this Tamil Nadu trip, and some parents of our students joined from Delhi, and some their spouses also, they joined. And one of the spouses of the student, he took a very big initiative to start a Tirtha Samrakshan group, Tirtha safety group. And he says that every temple should have a Patshala. But how many temples are interested in having a Patshala? Do we even have a vision? Can we make the trustees
There are multiple trusts in the Samaj, but these trustees, can we make them listen to us that please start a Pathshala in the trust, please start a Pathshala in the temple, please start a Pathshala in whatever school or college that you're running. Look at the missionary work the Christians are doing. Look at, like, say, for example, if you don't read the literature, the language is, if you don't read the language, the literature is lost. And if the literature is lost, the culture is lost. The Muslims read the Quran, so the language and the literature is preserved, so the culture is preserved. So we need to export or market our literature and our language studies in a very, very big way in the Jain Samaj. Only then, as we are struggling to save our heritage centers, we need to prepare a very good team of academicians and students and scholars who will be able to, what we are teaching in the department effectively can be taught in those schools and in those pathshalas very, very effectively. And then at the ground, we can work with the younger minds and prepare them to address the challenges that we have before. So this is one way that I'm working on the student community and preparing them to work with a train the trainers program. You train the younger generation in the pathshalas, in the schools, go to the colleges, disseminate this knowledge that you're learning in the department. This is one thing that we do. So I told you about the philosophical, spiritual, and contextual effective studies of the Jain's philosophy. That is very, very important. If we don't do it effectively, it will be very difficult to run the departments. We are spending millions of dollars and starting departments, and maybe a few students will come and study. I would like to say all our Tirthankars were Kshatriyas, all the Ganadharas of Mahavir were Brahmins, and today Jainism is in the hands of the Vaishya community. If the Vaishya community, which is the trading community, does not take cognizance of this great philosophy and promote it among their families and among the community, it is going to go to the hands of the Shudras. In the name of reservations, in the name of rooster system, the different departments, these will go to the other caste people, and I don't know how they will promote Jain studies. Just imagine a Christian running a madrasa and a Muslim running a church. Already in the Shwetambar temples, we have non-Jains as pujaris. So these Shwetambar temples we build huge, but there are no pathshalas over there. There are no people to guide and tell the visitors about the great philosophy that is. So this is one thing that we need to address. And now coming to the challenges. First of all, the students who pass out from the department, most of them are self-employed. We have entrepreneurs, we have retired people, and they're all well-to-do in life. But those who want jobs, I get at least 10 inquiries in a year. Please give us good teachers. But my students, they get married, they start their own business, they have their families. So I don't get committed teachers. I don't get committed teachers. I get teachers, but they're not committed. And they're not paid very well by the Samaj. So I'm not able to attract these students to help them to take up a job in this line. So that is commitment from the student community to take up this studies as a profession is very, very difficult for me. Second, that challenge that we face is that all the Jain scriptures are in Prakrit, in Sanskrit, the commentaries are in Sanskrit. So getting very good translations is very, very difficult. Getting the books in different languages is very difficult. So I will again, on this platform, I would like to say that we need to translate the literature in different languages, not pan-India, but pan-international languages, prominent languages. There are very interesting books. And secondly, if you go to a
You may find literature related to the Vedic religion, Vedic tradition, or Hinduism, or I mean Hinduism and Buddhism and Christianity and Islam. Small books. But as far as Jainist literature is concerned, to attract the non-Jains in a very simplified way, it's very difficult to find. So I always tell my students, please fill this vacuum, bring out good videos, bring out good audios, bring out good literature, make it, package it very beautifully, and give it to the community, to the social media, so that the world takes cognizance of non-violence. Today, in the name of religion, the the fundamentalist, the radical form of religion is being promoted. So there is so much of bloodshed in the name of religion, and the religion of non-violence is yet to be visited by the world community. And if we don't take it to the world, tomorrow some foreigner will come and he's going to promote the Jain philosophy and get a Nobel Prize. And then we'll say, oh my God, all this was there all the while in our tradition. So these kind of things are there. Okay, so now how we integrate Jainism, I'm just going to give you a glimpse of it. Like, for example, today the challenges are the students are using too much of mobile, too much of internet, too much of the social media, and all violent video games and the dark net web world. So lot of dark gray things are being promoted. So violence and evil is always one step ahead of good things. But we should understand that ultimately it is the truth that triumphs. So there are going to be more mental health issues among the children in the coming years. So we as Jainologists, we need to take cognizance of this challenge before our children and prepare capsules and packages and integrate psychology and Jainism, integrate psychiatry and Jainism, integrate so many other things. Like I integrate nature cure and Jainism and promote healthcare. And I have helped at least 200 of my students to give up medicines. There are students. I'm going to conclude in just 1 minute. I'm just concluding. It's 9:05. I'm so sorry about the time that I've taken. We have students from the army, and they say, Madam, just following the simple health tips, our work efficiency has gone up, and we are very happy that we understand the Jain philosophy. So I have colonels and army generals studying with us and is praising the Jain philosophy. So these are some of the challenges, and these are some of the ways that we take it forward. And about the environmental issues, the conversions, the distorted views of Digambars, Shvetambars, and Jains and non-Jains, whether it is a Vedic or the Shamanic tradition, all the sectarian divides, all these issues are addressed in the department studies. So I'm proud being a Jainologist, and there are so many challenges. I've only told a few of them and some solutions to a few of the challenges. Thank you, Nitin. Thank you for the opportunity, and thank you for your patient hearing. I'm sorry for the time that I've exceeded. Jai Jinendra. Thank you so much, ma'am. It was very enlightening, and I can definitely, resonate a few things which I heard from you and others as well around, the literature availability in different languages. I personally believe that it is a must. Availability of Pathshalas in our Jain temples. You talk about, people who are learning and studying Jainism, getting a good job is a difficulty, right? And without that, I think it is difficult, right, to get into that kind of a profession. So thank you so much for your insights around that. Next, I would like to introduce, can we have Sanjay ji? Yeah, Nitin, I'm just checking. Yeah, we have Sanjay ji. So, Jai Jinendra, Sanjay ji. Jai Jinendra. Sanjay ji is from Delhi. जो लोग उनको जानते हैं, आई थिंक बहुत सारे लोग जानते हैं पर्सनली, क्योंकि मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, तो मैं तो उनसे काफी इंस्पायर्ड रहता हूँ. And I keep watch his activities, his actions on the ground, because अगर मैं ये देखता हूँ कि
संजय जी हैं तो कोई ग्रास रूट लेवल पे और बिल्कुल नीचे जाके कुछ एक्शन हो रहा होगा जिसका कुछ आउटपुट हमें दिखेगा। ऐसा नहीं लगता कि अगर संजय जी हैं तो बस कुछ बातें होंगी और चले जाएंगे। अगर हम संजय जी की बात करें तो संजय जी विश्व जैन संगठन के प्रेसिडेंट हैं। दिल्ली में अगर हम देखें जितनी भी ग्रास रूट लेवल एक्टिविटीज होती हैं टू प्रोटेक्ट जैनिज्म और टू प्रोटेक्ट जैन धर्म, या फिर हम अपने हेरिटेज को बचाने की बात करें, या हम अपने अधिकारों की बात करें, या हम माइनॉरिटी स्टेटस की बात करें, तो ये शायद एक मेरे लिए सरप्राइज होगा अगर मैं वहां संजय जी को नहीं देखता हूँ। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए संजय जी, अगर रिसेंटली मैं गलत नहीं हूं तो सम्मेश शेखर जी का जो हमने एक्टिविटी चलाई है आपने जी ग्राउंड पे, जी आपने उसे लीड किया है और जी वो काफी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है टू सेव अवर हेरिटेज, टू सेव अवर सम्मेश शेखर। जी तो इसी बैकड्रॉप के साथ मैं आप बिल्कुल टाइम नहीं लूंगा, हम लोग जी आपको सुनना चाहते हैं, तो ओवर टू यू। थैंक यू। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सर्वप्रथम मैं नितिन जी और जैन हेरिटेज सेंटर के 20वीं वर्षगांठ पर शुभकामनाएं देता हूं। सब बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज, जैसे अभी योगेश जी ने बताया, आप बंधुओं, 15 जनवरी 2022 को आप सभी ने वीडियोस देखे होंगे। श्री सम्मेश शेखर जी हमारे शाश्वत क्षेत्र के, जहां पर आपने देखा कि कुछ काफी लोग जूते लेकर हमारे पर्वतराज पर टॉक्स पर बैठे हैं। क्यों? क्या वहां कोई प्रोटोकॉल नहीं था? क्या कोई देखरेख नहीं करने वाला? बड़ी चिंता हुई, समाज को चिंता हुई, हमने भी संज्ञान लिया, क्योंकि हम भी निश्चित थे कि वहां पर सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन उस वीडियोज ने हमें बहुत ही चिंतित किया, सकल जैन समाज को चिंतित किया। बंधुओं, विषय यहीं पर नहीं समाप्त होता। ये देखिए, मैं आपको ये एक गिरिडीह निकिन, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गिरिडीह की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं कि ये पर्यटन स्थल के अंदर पारसनाथ को इन्होंने प्रचारित किया हुआ है। इतना ही नहीं, इस वेबसाइट पर आपने लिखा था कि यहाँ से 9 जैन तीर्थंकर मोक्ष गए, कोई कहता है 24 तीर्थंकर मोक्ष गए। जो गिरिडीह, झारखंड की गिरिडीह, जिसके अंदर हमारा शाश्वत शिविर क्षेत्र आता है, अगर उसको ये ही नहीं जानकारी कि इस पर्वतराज से कितने तीर्थंकर मोक्ष गए, यद्यपि अनंतानंद संत मोक्ष गए, अनंतानंद तीर्थंकर मोक्ष गए, अनंतानंद 24 मोक्ष गई। जब हमने इस वेबसाइट को देखा तो उसकी शिकायत की, तो आपने ये तो ठीक किया कि 20 जैन तीर्थंकर मोक्ष गए, लेकिन आज तक भी वो इस वेबसाइट को अपडेट नहीं कर पाए, जिसके अंदर पर्यटन स्थल के अंदर वो श्री सम्मेश शेखर जी पारसनाथ हिल को पर्यटन स्थल के स्थान पर जैन तीर्थ क्षेत्र प्रचारित कर सकें। क्यों? क्योंकि ये एक प्रोसीजर है। आजकल आप देख रहे होंगे कि पूरे देश में सभी स्टेट्स टूरिज्म के नाम पर, इको टूरिज्म के नाम पर अधिक से अधिक धन कमाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर वो चाहते हैं कि विदेशी लोग आए, पैसा आए। उसी श्रृंखला में आपने, झारखंड सरकार ने, हमारे रघुवर दास जी की सरकार ने 2018 में एक गजट नोटिफिकेशन निकलवाने के लिए केंद्रीय वन मंत्रालय को रिकमेंडेशन दी कि आप जो हैं पारसनाथ हिल को इको सेंसिटिव जोन में घोषित करें। इसके लिए 26 फरवरी 2018 को केंद्रीय वन मंत्रालय, जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, आपने एक इनिशियल गजट नोटिफिकेशन जारी किया। प्रोसीजर के अनुसार कोई भी गजट नोटिफिकेशन पब्लिक को निकालने के लिए, उनके ऑब्जेक्शंस और सजेशंस के लिए आप 60 डेज के लिए उसको निकालते हैं। और उसका एक सबसे बड़ा लॉजिक है कि आप किन्हीं भी 2 न्यूज़पेपर्स में, जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं, और एक न्यूज़पेपर जो लीगल रीजनल लैंग्वेज में जो न्यूज़पेपर है, उसमें आपको प्रचारित करना है, ताकि स्थानीय लोग
क्योंकि इस पूरी जो इफेक्ट पड़ेगा वो स्थानीय लोगों पर होगा। और यहाँ पर देखिए सैकड़ों वर्षों से हमारी जो जैन शीर्ष संस्थाएं हैं वहां पर कार्यरत है, और सभी की सभी स्थानीय प्रशासन और सेंट्रल गवर्नमेंट और झारखंड सरकार से संबंधित हैं, और सभी सबको जानते हैं। लेकिन देखिए ये एक साजिश है हमारी उस सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट ने या स्टेट गवर्नमेंट झारखंड ने किसी भी न्यूज़पेपर में इसको प्रचारित नहीं किया। ये हमारे पास एक आरटीआई का एक जवाब है जिसके अंदर वो साफ तौर पर लिखते हैं कि उन्होंने केवल इस गजट नोटिफिकेशन को, इनिशियल गजट नोटिफिकेशन को अपनी वेबसाइट पर रखा। अब आप बताइए कि क्या वहाँ जो लोकल्स हैं, जो उस पारसनाथ हिल के लोकल्स हैं या हमारी संस्थाएं हैं, क्या वो नेट से जुड़ी हुई हैं? इसके अंदर मेरे को प्राप्त जानकारी के अनुसार केवल 132 सजेशंस और ऑब्जेक्शंस आए, जिसके अंदर एक भी जैन बंधु का कोई भी ऑब्जेक्शन सजेशन नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी साजिश रही होगी हमारे जैन समाज के साथ। अब विषय आता है कि उस इनिशियल गजट नोटिफिकेशन जो 26 फरवरी 2018 को जारी किया गया था, देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। अनादिकाल से श्री सम्मेद शिखर प्रमाणिक और प्रचारित नाम है, लेकिन भगवान पार्श्वनाथ के समय से यह पूरा पर्वतराज 49.33 किलोमीटर का पर्वतराज पारसनाथ हिल के नाम से प्रसिद्ध है। अभी वहां पर ये लगभग 16,100 एकड़ जगह है, 49.3 किलोमीटर एरिया। आज से 200 साल पहले अगर आप ब्रिटिशर्स की गजेटर्स देखेंगे तो उसमें साफ तौर पर लिखा है कि वहां पर कोई नहीं रहता है। तो वहां पर आज ये सेंसस के अनुसार 1200 लोग, 250 फैमिली कैसे आ गई? आज वो वहां के रेजिडेंट्स हो जाते हैं। उन्हीं लोगों के प्रमोशन के लिए ये गजट नोटिफिकेशन लाया गया। 2 अगस्त 2019 को ये गजट नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड ने जारी किया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रही, जो हमारा मेन ऑब्जेक्शन है, जो पूरे सकल जैन समाज के लिए चिंता का विषय है, इसके अंदर आप लिखते हैं पारसनाथ अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पारसनाथ। आपने 84 में इस पूरी हिल को पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया। हमारी कम्युनिटी को पता नहीं है। अब आप इसमें लिखते हैं कि इस पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य का एक भाग जैनों का पवित्रतम तीर्थ माना जाता है। देखिए प्रॉब्लम समझिए आप, पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य का एक भाग जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं है माना जाता है, कंसिडर्ड। अरे भाई सिचुएटेड है, ये तो अनादिकाल से सिचुएटेड शब्द है, प्रमाणिक है, प्रमाण है हमारे पास। आपने इसके अंदर श्री सम्मेद शिखर का उल्लेख नहीं किया, आपने इसमें 20 जैन तीर्थंकर का उल्लेख नहीं किया। अब आप देखिए कि इस पूरी जो हमारे पर्वतराज की इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है, स्वतंत्र पहचान है, अस्तित्व है, वो तो नष्ट हो गई। उसको तो इन्होंने इस गजट नोटिफिकेशन से मिटा दिया। आने वाले समय में क्या होगा? कोई भी आदमी माना जाता है भाई, और कहीं भी हो सकता है, पूरे देश में, विश्व में कहीं भी हो सकता है। आप कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि गजट नोटिफिकेशन है, गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है। बात यहीं पर नहीं रुकती है। आपने इस सेंसिटिव जोन में पारसनाथ हिल और मधुबन को, जो इनके कोऑर्डिनेट्स हैं, दोनों को एज ए विलेज, एक लिस्ट, विलेजेस की लिस्ट है इको सेंसिटिव जोन में, आपने वो दोनों को इसके अंदर ले लिया। और मैं आपको बताऊं कि पारसनाथ हिल की जो कोऑर्डिनेट्स हैं, वो भगवान पार्श्वनाथ 23वीं जो टोंक है हमारी, उसके पास डाक बंगले के पास जाके वो कोऑर्डिनेट शुरू होते हैं। यानी कि लगभग 12,000 एकड़ इको सेंसिटिव जोन में आप बोलते हैं कि 0 से 25 किलोमीटर तक हम इको सेंसिटिव जोन होगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपने गजट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी कि वो जोनल टूरिज्म प्लान बनाए, टूरिस्ट जोनल प्लान बनाए, और उसके अंदर आपने कुछ ऐसी एक्टिविटीज को, परमिशन को रेगुलेटेड कर दिया जो हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। जबकि पूरे पर्वतराज पर तो कोई होना ही नहीं चाहिए। जैसे हमारे कैलाश पर्वत है, भगवान
आदिनाथ का मोक्ष स्थल है, वहां तो कोई जा ही नहीं सकता। इसी प्रकार से 20 जैन तीर्थंकर मोक्ष स्थल पे कोई नहीं जा सकता होगा, मैं मानता हूं ऐसा। आज से 250 वर्ष पूर्व जब हमारे ये चरण चिन्ह है, उससे पहले तो शायद कोई जाता भी ना हो वहां। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अंग्रेजों ने यहाँ पर 200 साल पहले एक रिहाइश बनाने का प्रयास किया, क्योंकि जैसा कि आपको विदित ही है, कैलकाटा और हमारी पारसनाथ हिल की जो टेम्परेचर है वो लगभग 10 से 15 डिग्री का फर्क होता है। और अंग्रेज आपको पता है कि शौकीन होते थे पहाड़ों में रहने के, और उन्होंने प्रयास किया डाक बंगला बनाने का, और 70 लोगों के लिए उन्होंने वहां बनाया, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो सके, क्योंकि वहां पर पानी की सुविधा नहीं है। अब आपने इस गजट के माध्यम से कमर्शियल पानी एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपने इसमें रेगुल बना, आपने इसमें इको सेंसिटिव जोन में, क्योंकि इनका जो लक्ष्य था वो था इको टूरिज्म, पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देना। क्या नाम दिया उन्होंने? स्थानीय लोगों के हम सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप बताइए, स्थानीय लोगों की सपोर्ट जो 16,000 एकड़ में है, क्या उन लोगों के लिए हमारे शाश्वत तीर्थ को आप अपवित्र करेंगे? आपने वहां पर इस गजट के अंदर आपने लिखा है, वहां पर आप मुर्गी पालन कर सकते हैं, स्थानीय लोग बकरी पालन कर सकते हैं, कमर्शियल लाइव स्टॉक कर सकते हैं। आप बताइए कमर्शियल कैसे होगा? आप वहां पर रात को गाड़ियां चला सकते हैं, सड़कें चौड़ी कर सकते हैं, और ये टूरिज्म प्लान में आएगा। आप वहां पर बैलून्स चला सकते, बैलून्स, हवा पानी, हवा के गुब्बारे, हेलीकॉप्टर्स, ये सब सुविधाएं हैं। और आपने एक बात और है कि आपने वहां परमानेंट स्ट्रक्चर के लिए एप्लीकेबिलिटी नहीं है, वो बैन है, लेकिन आप टेम्पररी स्ट्रक्चर कर सकते हैं। जैसे आपने देखा ऑयल स्टेशन में आजकल टेंट चलता है, क्योंकि जो झारखंड सरकार है, अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, उन्होंने एक स्टेट टूरिज्म पॉलिसी की 2021 की यहाँ पर दिल्ली में उन्होंने प्रमोट करने के लिए वो आए थे। उन्होंने बोला है कि वो 10 करोड़ रुपए तक का लोन, 10 करोड़ रुपए तक की राशि, प्रोत्साहन राशि देंगे, सहयोग करेंगे, जिसके अंदर जीएसटी की सुविधा है, ये सुविधा है, वो सुविधा है। और वो पारसनाथ को भी उसमें उन्होंने लिखा है। और धार्मिक पर्यटन, इको टूरिज्म, देखिए पर्यावरण पर्यटन इस गजट के माध्यम से, और सरकार प्रमोट कर रही है पारसनाथ को धार्मिक पर्यटन के नाम से, जो कि बिल्कुल सकल जैन समाज को और हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं है, क्योंकि पर्यटन शब्द तो हमारे उस क्षेत्र के लिए प्रयोग हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हमें, हमारा जो वो तीर्थराज है वो धार्मिक यात्राओं के लिए है, जैसे कैलाश पर्वत की यात्रा होती है, वैष्णो देवी की यात्रा होती है, या जो प्रमुख अजैन तीर्थ हैं, केदारनाथ का तीर्थ है, अमरनाथ का तीर्थ है, इसी प्रकार से हमारा श्री सम्मेद शिखर तीर्थ है। तो जब हमने ये 15 जनवरी को ये लोगों को देखा वहां पर, तो हमने 27 जनवरी को स्टेट गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट को लिखा कि आप यहाँ पर वैष्णो देवी की समान, जैसे वैष्णो देवी में सुविधाएं होती हैं, एक तो सबसे जरूरी है, जितने भी यात्री आते हैं, जो भी श्रद्धालु आते हैं, उनका पंजीकरण होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और जो ये वंदना मार्ग है पहाड़ पर जाने के लिए, यहाँ पर जो ये अभक्ष सामग्री बेचते हैं, इन्होंने इलीगल एंक्रोचमेंट किया हुआ है, आप उसको हटवाइए। और कम से कम 2 जगह पर, एक स्टार्टिंग में और शीतल नाला पर, आप कम से कम 2 चेक पोस्ट विथ स्कैनर्स, आप विथ सीआरपीएफ 50 पर्सनल, हमने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को लिखा कि आप ये सुविधाएं वहां प्रोवाइड करें। और यदि आपको इसमें बजट की कोई दिक्कत है, तो हम अपनी कम्युनिटी से आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। अब वहां पर सोलर लाइट की प्रॉब्लम है, वहां पर ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, तो वहां पर जो है लोगों ने दुकानें खोल ली हैं, वो 20 रुपए की बोतल 40 की बेचते हैं, और हमारे लोग वहां पर जाकर खरीदते हैं, उसके साथ वो अन्य भक्ष्य सामग्री बेचते हैं, जूस बेचते हैं और दूसरी चीजें बेचते हैं। क्यों? क्या हम वहां एक ड्रिंकिंग वाटर का अरेंजमेंट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अगर सरकार, झारखंड सरकार सौंदर्यकरण करना चाहती है वास्तव में श्री सम्मेद शिखर पारसनाथ हिल का, तो वहां पर हमें बहुत कुछ नहीं चाहिए। हमारे सारे मुनिराज, हमारे सारे संत एक ही बात कहते हैं कि हमारे उस तीर्थराज की जो प्राचीनता है, जो नेचुरलिटी है प्राकृतिक रूप से, हमें वही चाहिए। हमें वहां किसी प्रकार की कोई डेवलपमेंट नहीं चाहिए, हमें कोई हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए, हमें कोई वहां पर्यावरण पर्यटन नहीं चाहिए। अब आप समझिए कि कोई निवेशक, यदि कोई इन्वेस्टर वहां जाता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, तो वो अगर इन्वेस्टमेंट करता है, वो वहां कमर्शियल होल्डिंग लगाता है, तो क्या ये एप्लीकेबिलिटी होगी? क्या हम उसे लगाने देंगे? किस तरह के होल्डिंग्स होते हैं आप समझ सकते हैं। तो कोई भी इन्वेस्टर क्यों पारसनाथ हिल पर इन्वेस्ट करेगा? क्यों सरकार उसको सहयोग करेगी? क्या लगाएगा वो वहां पर? है क्या वहां? क्या बेचने के लिए है वहां? तो हमारी जो मांग है, हम चाहते हैं कि आप अगर वाकई में सौंदर्यकरण करना चाहते हैं, तो वहां पर आप डस्टबिन लगाइए, वहां सोलर लाइट्स लगाइए, वहां पर आप बाइक्स का जाना बंद करिए, एनक्रोचमेंट को समाप्त करिए,
आप वहां पर अभक्ष सामग्री को करिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी सबसे बड़ी डिमांड है वो है कि पवित्र जैन तीर्थ स्थल घोषित किया जाए, जो मांस और मदिरा मुक्त पूरा मधुबन और पूरा पारसनाथ हिल हो, और जो हमारा ये वंदना मार्ग है ये अतिक्रमण मुक्त हो, अभक्ष सामग्री मुक्त हो। ये हमारी मुख्य मांग है, ये हमारी नहीं, हमारे तीर्थराज पर कार्यरत सभी प्राचीन संस्थाओं की मांग है। ये विश्व जैन संगठन या मैं संजय जैन या हमारी संस्था विश्व जैन संगठन ये किसी व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं है। हम अपने श्री सम्मेश शिखर जी के लिए कार्य करना चाहते हैं। देखिए, आपको विदित ही है, गत 100, 150, 100 वर्षों से वहां पर किसी भी प्रकार की कोई ऐसा नहीं लगता है कि आप किसी एक पवित्र तीर्थ जाते हैं। अगर आप मुस्लिम लोगों के मक्का पर जाकर देखेंगे तो वहां किसी जैन को जाने नहीं देते हैं। आप कहीं भी जाते हैं, बहुत सारी जगहों में आज एक पूरा ड्रेस कोड है। हमारे यहाँ तो कोई ड्रेस कोड ही नहीं है। इसी की प्रॉब्लम की वजह से कोई भी आदमी पहाड़ पर जाता है, वहां सिगरेट पीता है, शराब पीता है। अभी वहां पर बाइक्स गई हैं। अरे ये क्या बात हुई, ये तो कोई प्रोटोकॉल नहीं हुआ। मैं पूरे जैन समाज से ये विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ो, क्या हमारा विषय, क्या हम कहीं गलत हैं? अगर गलत हैं तो हम पूरे समाज को माफी मांगने के लिए तैयार हैं। लेकिन 17 मार्च को जब ये मैंने गजट देखा और हमने केंद्र सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी और हमारे जो झारखंड सरकार है, हमने सबको नोटिस दिया, याचिकाएं दी। देखिए, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन चलता है कि ये तो जी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। देखिए, 2018 में झारखंड सरकार ने रिकमेंड किया इको सेंसिटिव जोन के लिए, और जो भी इन्होंने वहां पर रिकमेंडेशन दी है दूसरी सर्विसेज के लिए। लेकिन गजट नोटिफिकेशन, जो इनिशियल और फाइनल गजट नोटिफिकेशन 2 अगस्त 2019 को मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट ने जारी किया है। तो हमारी जो लड़ाई है इनडायरेक्ट में तो झारखंड सरकार के साथ में भी है, लेकिन डायरेक्टली हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट के साथ में है। हमारे जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने हमारे इस मैटर को सीरियसली लिया। उन्होंने हमें रिटन में लिख के दिया है कि हाँ, इस गजट नोटिफिकेशन से जैन धर्म के प्राचीन तीर्थ की स्वतंत्र पहचान पर फर्क पड़ता है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि हम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो है इसको थोड़ी देर इसको फर्दर स्टेप ना लें, वैसे होल्ड कर दें। तो हमने भी यही मांग की है केंद्र सरकार से कि आप या तो इस पारसनाथ हिल और मधुबन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं आप इसमें से रिमूव कर दीजिए, हमारी कोई आपत्ति नहीं है। वन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जोनल मास्टर प्लान, टूरिज्म मास्टर प्लान, इको सेंसिटिव जोन और जो भी आपकी और अन्य सूचियां, जो भी और लिस्ट्स हैं, इन सब से हमारे इस तीर्थराज को कृपया हाथ जोड़कर हम निवेदन करेंगे, आप इसको उससे बाहर कर दें। हमारा ये सर्वोच्च जैन तीर्थ 20 जैन तीर्थंकरों की वर्तमान में जो 24 इनमें से 20 जैन तीर्थंकरों की स्थल है, उसको आप इन सब चीजों से बाहर कर दें। हम अपने तीर्थराज पर पूर्ववत जैसे सैकड़ों हजारों वर्षों से जाते आए हैं, हम वैसे ही जाना चाहते हैं। और हमारे जो पूजनीय संत हैं उनकी भी यही, उन्होंने भी हमें यही मार्गदर्शन दिया है कि हम अपने इस तीर्थराज पर किसी भी प्रकार की कोई रात को गाड़ियां या सड़कों का चौड़ीकरण या आप कहते हैं कि जी इसमें फ्यूल ऐसे नहीं होगा, वो सब हमें मान्य नहीं है। हम अपने तीर्थराज पर जाना चाहते हैं इस तरीके से। अब विषय आता है कि इसमें आपने एक विषय और मैं आपको बताना, जानकारी में लाना चाहूंगा। इस गजट नोटिफिकेशन के अंदर जो रिकमेंडेशन दी गई है उसके अंदर 8 लोगों की एक कमेटी कंस्टिट्यूट की गई है, जो इस इको सेंसिटिव जोन में जो 75% आप मान के चलिए पार्सनाथ हिल का जो हिस्सा है 80%, 0.86 एकड़, जिसके अंदर हमारी 20 जैन तीर्थंकरों की मुख्य टोंके और गौतम गंधर जी की टोक आती है, केवल उस टोक को ये कहते हैं कि जी आपका क्षेत्र है। क्या ऐसा संभव है? क्या पूरा पर्वतराज अनादिकाल से हमारा है? क्या कैलाश पर्वत का केवल, अगर कहते हैं कि शिव ने या भगवान आदिनाथ ने वहां पर तपस्या की, मोक्ष गए, तो क्या वो केवल जो उसका टॉप है क्या केवल वही पवित्र है? क्या वो जीरो लेवल से तलहटी से ऊपर तक पवित्र नहीं है? लेकिन यहाँ पर आपने आकर हमारे जैनों के साथ, हम अल्पसंख्यक जैनों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, जो हमें बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। इसी श्रृंखला में हमने 26 मार्च 6 जून को दिल्ली जंतर मंतर पर बहुत बड़ा आंदोलन किया। और अभी हमने 2 अगस्त 2019, क्योंकि 2 अगस्त एक ऐसा दिन है जिसको हम काला दिवस मान के चलते हैं अपने तीर्थराज के लिए, क्योंकि तीर्थराज को उन्होंने एक टूरिस्ट प्लेस बनाने का प्रयास किया, जिस प्रकार से राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने प्रयास किए हैं, जो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है।
हमने हमारा जो लाल मंदिर जी, लाल किले पर प्रसिद्ध मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, वहां से हम भगवान पार्श्वनाथ से हाथ जोड़कर आशीर्वाद लेंगे और महात्मा गांधी की समाधि राजघाट तक एक पैदल मार्च करेंगे 2 अगस्त सुबह 10 बजे। हमारा जो भी प्रयास होगा वो अहिंसक प्रयास होगा, शांतिपूर्ण प्रयास होगा, क्योंकि गांधी जी ने भी अहिंसावादी तरीके से इस देश को आजाद कराने में सहयोग किया। हम लोग उसी मार्ग पर अपना कार्य करेंगे। हम किसी भी प्रकार का ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जो हमारे जैन समाज, हमारे संत समाज, हम लोगों के लिए हानिकारक हो। बंधुओं, ये तो तीर्थ की बात थी, विषय यहीं समाप्त नहीं होता है। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा, जिस प्रकार से आपने देखा कि अभी चर्चा हो रही थी प्राचीन तीर्थों की, उसके अंदर कुछ हम ऐसे प्रमुख प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध जो तीर्थ हैं हमारे, जो कभी बहुत बड़े प्राचीन मंदिर रहे होंगे, जैसे कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी, या आगरा का लाल किला। आगरा का लाल किला आप सोच भी नहीं, आप कैसे, आप सोच रहे होंगे कि लाल किला कहां से आ गया। अरे भाई, लाल किला 10वीं 10th सेंचुरी की भगवान मुनि सुव्रतनाथ की प्रतिमा, ब्लैक स्टोन की प्रतिमा, और पिलर्स आगरा के किले की जो मेन गेट है और जो यमुना नदी है उसके बीच में जमीन से निकले हैं, जो आज लखनऊ में वो प्रतिमा जी स्थापित है म्यूजियम में। पिलर्स का पता नहीं। फतेहपुर सीकरी को आज आप 16वीं सदी के फतेहपुर सीकरी को आप पूरे विश्व प्रसिद्ध, आप यूनेस्को में रजिस्टर्ड कहते हैं, लेकिन वीर छबीली टीला से 8वीं से 11वीं 12वीं सदी तक की प्राचीन प्रतिमाएं, सरस्वती की प्रतिमाएं इंस्क्रिप्शन के साथ वहां से प्राचीन धरोहर हमारी प्राप्त हुई है। और आपने से उसमें से मुश्किल से 20% एक जैन समाज के बहुत ही प्रेशर में वहां पर एक आपने स्थानीय म्यूजियम बनाकर उसमें स्थापित किए हैं। बाकी का तो जानकारी नहीं है। कुतुब मीनार में हमने काम किया। कुतुब मीनार से मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी ऐसी सामग्री जिसमें भगवान जैन तीर्थंकरों का खड़गासन और पद्मासन अवस्था में लिंटल मिले हैं, और ऐसे सांचे मिले हैं जिसमें जैन तीर्थंकरों की सांचों से प्रतिमाएं बनती थी 10वीं सेंचुरी की। लेकिन वो आज हमारी इस प्राचीन धरोहर का क्या हो रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, मैंने काम किया अयोध्या में हनुमानगढ़ी से। हनुमानगढ़ी से 4 सेंचुरी बीसी केवली जैन तीर्थंकर की प्रतिमा आज जो एक्सकवेशन में प्राप्त हुई थी बीबी लाल जी को, वो आज दिल्ली के एक म्यूजियम के स्टोर में रखी हुई है। वर्तमान परिवेश में आप देखेंगे पिछले काफी वर्षों से और आज तक जितनी भी प्राचीन धरोहर, जैन धरोहर हैं, या तो वो स्टोर के अंदर है या उनका पता नहीं है। हमने आईटीआई में हम प्रयास करते हैं कि हम आईटीआई में उनकी जानकारी लें और उनको देखें जाकर, लेकिन मैं आपको बड़ी पीड़ा के साथ बताना चाहूंगा कि हमारी जो प्राचीन धरोहर है उसका कोई अता पता नहीं है। हमारे पास ऐसे जो जब से ये हमारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आरंभ हुई 1880, तब से हमारे पास सारी पब्लिकेशंस हैं। हम उसके अंदर स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, उसके अंदर फिर उसको ढूंढते हैं कि वो कहाँ पर है। अभी चर्चा हो रही थी कि जैसे प्राचीन धरोहरों को हम, हमारी जो कन्वर्टेड हो गई, आइडल्स हो गई, या जो हमारे जैन टेम्पल्स कन्वर्टेड हो गए, मेरे पास ऐसे हजारों प्रमाण है। लेकिन हम प्रयास करते हैं कि एंटिक्विटी ऑफ जैनिज्म हमारा फेसबुक पर पेज है, नितिन जी हमारे साथ में काफी हम काम करते हैं, काफी जुड़े हैं हमारे साथ। हम प्रमाणिक रूप से, अभी जैसे नितिन जी ने भी चर्चा की कि कुछ लोग कॉपी पेस्ट करके विदाउट, मतलब उसके कोई भी उसकी प्रमाणिकता को चेक नहीं करते हैं, केवल कॉपी पेस्ट किया, सोशल मीडिया में फॉरवर्ड कर देते हैं। और मैं आपको बताऊं कि वो सोशल मीडिया में फॉरवर्ड होने से जो नॉन जैन स्कॉलर्स हैं उसको यूज करते हैं, उसको मिसयूज करते हैं, क्योंकि उनको तो जानकारी है नहीं, किसी भी जैन साइट से उठाया और वो कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आप कृपया कोई भी बंधु अगर इस प्रकार की जो जानकारी है, प्राचीन पुरातत्व है, इंस्क्रिप्शंस हैं, आइडल्स हैं, या मंदिर के पार्ट्स हैं, अभी जैसे सोमनाथ के मंदिर पार्ट देखे, वो वहां के म्यूजियम में है। हमारे विदेशों में हजारों प्रतिमाएं। वैशाली से आपको जानकारी नहीं होगी, भगवान चंद्र प्रभु की एक प्रतिमा वैशाली से 4th सेंचुरी की, एक प्राइवेट कलेक्शन ब्रिटिश में। बहुत सारे ब्रिटिश कलेक्शंस हैं, ब्रिटिश हमारे जो म्यूजियम्स हैं उसके अंदर, इंटरनेशनल म्यूजियम्स में बहुत सारी संग्रहित हैं, बहुत सारी स्टॉल हैं। लेकिन हमारी सरकार, हम कार्य करते हैं, हमने कार्य किया और सरकार से मांग की कि आप एंटीक्विटी एक्ट को सख्त करिए, क्योंकि वो बहुत ही लचीला है, उसके अंदर बहुत ही कम सजाएं हैं। और भारत से जो अधिकतर जैन प्रतिमाएं चोरी होकर विदेशों में जाती हैं, वो सबसे ज्यादा कीमत से बेची जाती हैं, क्योंकि उनकी
प्रामाणिकता और जैन धर्म की जो प्रमाणिक विशालता है वो उसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा कीमत मिलती है। 2007 में मैंने दिल्ली में एक भगवान महावीर की और 2 जिनमें लाक्षण नहीं थे अष्ट धातु की 3 प्रतिमाएं 700 वर्ष प्राचीन पकड़ी गई थी, और मैं आपको बताऊं वो 10 करोड़ में मूल्य की बेचते हुए पकड़ा गया था, जिसको हमने सुपरदारी में लेके एक मंदिर जी में विराजमान कराया। हम चाहते हैं कि जितनी भी प्राचीन धरोहर किसी भी मंदिर में है, किसी जैन मंदिर में है या म्यूजियम में है या इंटरनेशनल म्यूजियम्स में है, हम उन सबको एक दिल्ली के अंदर एक सेंट्रलाइज म्यूजियम होना चाहिए, सेंट्रल जैन म्यूजियम। उसके अंदर हम वो सारी प्रतिमाएं जो हमारे सरकार के म्यूजियम्स में है, और एक चीज और है, वहां पर वो उसको जो प्रचारित करते हैं वो एग्जैक्टली उसकी जो लोकेशन है, जो जहां से वो रिकवरी हुई है वो नहीं लिखते हैं। जैसे कुतुब से हमारा लिंटल मिला जैन तीर्थंकरों का, तो उस पर वो कुतुब मीनार नहीं लिखते हैं, उसको मेहरौली लिखते हैं। तो हमने कुतुब के लिए काम किया कि आप यहाँ पर एक साइट आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम बनाइए, क्योंकि ये आज से नहीं है, पूरे देश में 42 ऐसे 60 आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम्स हैं जो काम कर रहे हैं, ताकि जब कोई आदमी उस परिवेश में देखे, उस जैसे कुतुब मीनार आया, उस परिवेश में जो वहां से सामग्री मिली, वो जैन हो या वैदिक धर्म से संबंधित हो, वो वहां पर उस परिवेश में देखेगा तो उसका अलग से ही उसको एक अच्छा लगेगा देखने में, और प्रामाणिकता के साथ वो देख पाएगा। तो इस प्रकार से हम पुरातत्व को बचा सकते हैं। अभी हम एक खंडार किला राजस्थान की बात करूंगा मैं। देखिए वहां पर 8वीं सदी का जो रणथंभौर किला है, उसके राजाओं ने 8वीं सदी को वहां पर उस मंदिरों को बनवाया, लेकिन मुझे लगता है कि वो प्रतिमाएं और 600 साल कम से कम सेकंड सेंचुरी की होंगी। अभी आज खारवेल की गुफाओं में कब्जा हो चुका है, गिरनार पे कब्जा हो चुका है। आप खारवेल की गुफा में जाएंगे, आप वहां जा ही नहीं सकते हैं। अब देखिए अभी अभी हमने पोस्ट किया, अभी हमारे डॉक्टर अनेकांत जी वहां गए और उन्होंने पोस्ट किया कि वहां पर जो है सब चीज वहां पर कन्वर्टेड हो चुकी है, वहां पर एक सामान रखा हुआ है, एक साधु बैठे हुए हैं। क्यों? क्या अन्य धर्म के तीर्थों पर ऐसा हो सकता है? केवल जैन ही क्यों टारगेट होते हैं? क्योंकि हम लोग व्यवस्थित नहीं है, हमारी सेंट्रलाइज बॉडी नहीं है, हमारी सेंट्रलाइज संस्था नहीं है। जैसे अभी आप वक्फ बोर्ड की जितनी भी जो प्रॉपर्टीज हैं, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है उसके अंदर में, वो जीपीएस से उनकी पूरी जो जितनी धरोहर है, जितनी जमीनें हैं सारी उसको लाइन अप कर रहे हैं। लेकिन जैन प्रॉपर्टी के लिए ना तो जैन समाज कर रहा है, ना ही हमारी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स करता है। हमने माइनॉरिटी ली, हमें उसका बेनिफिट मिला। देखिए यदि आप अपने जो हमारी माइनॉरिटीज लेने का जो पर्पस था वो था आर्टिकल 30, और जो हमारी धरोहर है, प्राचीन धरोहर है, जैसे कुंडलपुर के केस में आपके ध्यान होगा, संज्ञान में होगा, के मोहम्मद जी जो हमारे उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में थे, उन्होंने वहां पर केस किया, और उस प्राचीन प्रतिमा को लेने के लिए केवल एक चीज काम आई। अभी जैसे अभी चर्चा चल रही थी कि अगर हम अपनी जो प्राचीन धरोहर है उसके लिए हम सरकार से अगर पैसा लें, अनुदान लें, तो हमें बड़ी हेल्प मिल जाती है। लेकिन मैं एक जानकारी देना चाहूंगा आपको। देखिए अगर आप लोन लेते हैं, अगर आप इंटरेस्ट फ्री लोन लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहां तक अगर गवर्नमेंट का पैसा अगर आप अपनी धरोहर पर यूज करेंगे, तो आप ये मान के चलिए कि आने वाले समय में वो प्रॉपर्टी, क्योंकि सरकार का पैसा वहां लग चुका है, तो वो गवर्नमेंट उसको एब्जॉर्ब कर सकती है। जैसे कुंडलपुर के केस में क्या हुआ कि जो तलहटी में जो मंदिर थे, उन मंदिरों की, और जो पर्वतराज पर मंदिर हैं, तो एक पुरातत्व विभाग का एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर साफ तौर पर लिखा है कि ये मंदिर जैनों द्वारा पूजनीय है और इसकी देख रेख जैन समाज द्वारा की जा रही है, कि इस्टेब्लिश्ड एंड मेंटेन। देखिए मेंटेन में अगर आप अपने समाज की राशि लगाएंगे तो आप कल को इस बात से बच सकते हैं कि उसका अधिग्रहण नहीं होगा, लेकिन अगर सरकार का अनुदान का 1 रुपया भी आपने लगाया तो आप निश्चित रूप से मान के चलिए कि वो आने वाले समय में सरकार उसको अधिग्रहण कर सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिनों बाद शायद ये जैसे रिलीजियस प्लेस एक्ट है, शायद इसको ये रेक्टिफाई करेंगे, तो कुछ भी हो सकता है। तो हम ये चीज का जरूर ध्यान रखें, अगर हम सरकार से पैसा ले रहे हैं तो ये मान के चलें कि आने वाले समय में हमारे साथ क्या हो सकता है। देखिए अभी विषय, बहुत सारे विषय हैं हमारे पास, अभी चर्चा चल रही थी, जैसे कुछ विषयों में मैं संज्ञान जैसे बात करना चाहूंगा। जैन्स की जो वर्तमान स्थिति है सामाजिक रूप से और पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग नहीं। हम जैनों को जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के आयोग हैं, अभी जैसे मैंने देखा कि संघ लोक पब्लिक सर्विस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग में 1926 से आज तक एक भी चेयरमैन या एक भी सदस्य जैन नहीं बना।
क्यों? क्या हमारे IAS ऑफिसर्स रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स नहीं है? मिनिस्ट्री ऑफ और दूसरे बहुत सारे आयोग हैं जिसके अंदर एक भी जैन नहीं है। हम सरकार को बार बार लिखते हैं, राज्यसभा के माध्यम से या लोकसभा के माध्यम से, आप किसी भी सुरक्षित सीट से कृपया हम टैक्स पेयर्स को एक सीट, एक केंद्र सरकार में स्थान दें। काफी लिखने का प्रयास करते हैं और समाज को भी जागरूक करते हैं कि केवल आप अपने नेताओं को मंचों पर बुलाकर उनका सम्मान करते हैं, मंचमाला करते हैं, इतना ही मत करिए, कम से कम उनसे निवेदन करिए कि आप हमारे जैन समाज के लोगों को टिकट दीजिए, सुरक्षित सीट से लाकर उनको लोकसभा या राज्यसभा के माध्यम से केंद्र में एक जरूर पद दें, ताकि हमारी जो समस्याएं हैं, जैसे हमारा श्री सम्मेश शिखर जी का विषय है, आपको मैं बता दूं कि रेवती रमन सिंह जी जो गत अभी रिटायर हो गए हैं, अपने कार्यकाल पूरा हो चुका है समाजवादी पार्टी से, प्रयागराज से वो आते हैं और वो जैन समाज से काफी जुड़े थे। उन्होंने हमारे विषय को 30 मार्च 2022 को राज्यसभा के अंदर उठाया और उन्होंने बहुत ही बिना गैर राजनीतिक रूप से सरकार से निवेदन किया कि आप इस गजट नोटिफिकेशन को रद्द करें या अमेंड करें, इससे जैन समाज को परेशानी होगी। अब जैसे हमारे माननीय हेगड़े जी, वीरेंद्र हेगड़े जी हमारे राज्यसभा से नॉमिनेटेड हुए हैं, तो मुझे आशा है कि हम उनके माध्यम से काफी कार्य कर पाएंगे। अब मैं बस शॉर्ट में, एक पॉपुलेशन के बाद बहुत जरूरी होती है कि हम लोग जैसे नेट पे देखते हैं, सोशल मीडिया में, कि किस प्रकार से हम अपनी जनसंख्या को बढ़ाएं। तो कोई कहता है कि 3 बच्चे करें, कोई कुछ कहता है। तो मेरा इसमें मानना है कि जैसे बुद्धिस्ट ने किया, जो मूल बोध हैं वो केवल आज की पॉपुलेशन के 15% मूल बोध है, और उन्होंने नव बोधा करके स्वागत किया लोगों का जो इच्छा से आते हैं। इसके अलावा सबसे जरूरी है जो अनाथ बच्चे, हमारे बहुत ही छोटे बच्चे, अनाथ बच्चे हैं, जिस प्रकार से जैनों का इतिहास रहा है, हम जैनों ने हमेशा अपने मंदिरों के, अपने जो स्थानक हैं, जो हमारे प्राचीन तीर्थ क्षेत्र हैं, उनके साथ में हमेशा कॉलेज, स्कूल या भवन इस तरह के बनाए, ताकि खेत बनाए, ताकि हम लोगों की कम्युनिटी की हेल्प कर सकें। तो क्या हम कुछ ऐसा शुरुआत नहीं कर सकते कि कोई अनाथ बच्चों को हम अडॉप्ट करें, हमारी एक सेंट्रलाइज बॉडी हो पूरे देश में, और जो फंड है हमारा, जिस प्रकार से आज देखिए खर्च पूरा अलग अलग जो संस्थाएं हैं, अलग अलग संस्थाएं खर्च कर रही हैं, कोई भी ऐसी सेंट्रलाइज बॉडी नहीं है या कोई ऐसा सेंट्रलाइज फंड नहीं है, कोई बैंक नहीं है सेंट्रलाइज, ताकि हम जो जैन कम्युनिटी को जो फंड चाहिए किसी कार्य के लिए, हम वहां से वो ले सकें। हम लोगों को अपनी व्यवस्थाएं खुद करनी पड़ती हैं, हम संस्थाओं को अपने अपने खर्चों के लिए लोगों के पास बार बार जाना पड़ता है, एलिगेशंस भी लगते हैं, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ लोगों ने बिजनेस भी बनाया हुआ है, केवल डॉक्यूमेंट्स पर आज संस्थाएं चल रही हैं, ये बहुत चिंता का विषय है, केवल कॉपी पेस्ट करना, इसका उधर उसका उधर, तो ये सब बड़ा चिंता का विषय है। मैं इन्हीं सब विषयों को के साथ, आपने नितिन जी मुझे अवसर दिया, योगेश जी, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, और निश्चित रूप से मैं अपना प्रयास करूंगा कि हम अपने श्री सम्मेश शिखर जी को की स्वतंत्र पहचान, पवित्रता को पूर्ववत बना के रखें। हम रहें या ना रहें, हमारी आने वाली पीढ़ियां इस शिखर जी पर स्वतंत्र रूप से दर्शन करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र संजय जी, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज हमें समय दिया। जी आपके जितने भी प्रयास हैं, हम सब आपके साथ ही हैं, और आपके बिल्कुल मार्गदर्शन से हम भी वही प्रयासों में लगे हैं। जी और समय का विशेष ध्यान रखते हुए एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो मुझे आपके पूरे वक्तव्य में, कई सारी बातें हैं, मैंने लिस्ट बनाई है, उन पे मैं बाद में शायद आपसे वन ऑन वन भी विचार करूंगा कभी। जी लेकिन एक बात मैं ऑडियंस और जितने भी लोग हैं अभी, उनके लिए जरूर रिपीट करके कहना चाहता हूँ कि जो एक सबसे बड़ा मुझे लगता है पर्सनली, क्योंकि मैंने भी अनुभव किया है समाज में काम करके, जो चीज मिस हो रही है वो है कि हमारे पास एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी नहीं यस है। बिल्कुल, फंड भी हम नहीं है, संगठित, मैं फंड भी नहीं है बहुत हमारे मतलब पास, अपने यंग जेंस में भी लोगों से कहता हूँ कि हम संगठित तो हैं, सुसंगठित नहीं है। तो संगठन नहीं नेचुरल। जी हम अभी छोटे छोटे ग्रुप्स में बहुत बटे हुए हैं, हर आदमी अपना प्रयास कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि डायरेक्शन अलग अलग है। तो वो बिल्कुल जो एनर्जी है, एक तो माइनॉरिटी है, कम है, उसके बाद एनर्जी के डायरेक्शंस अलग अलग हैं, एनर्जी के लेवल्स अलग अलग हैं। तो जो आउटपुट आपको चाहिए वो आपको मिल नहीं रहा है, जबकि ऊर्जा तो पूरी लग रही है। जी तो इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि काफी समय भी हो चला है, आपका दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। अब मैं धन्यवाद। बुलाना चाहूंगा श्री राजेंद्र प्रसाद जी सर को। सॉरी सर, आपको काफी इंतजार करना पड़ा।
लेकिन क्या करें कि बकतब ऐसे चल रहे हैं. So I will just quickly introduce Dr. Rajendra Prasad ji. We also call them Nenad, if I'm calling it right, which means that a Tamil Digambar who has been active with the Tamil Jain community over the last 15 years. Shri Prasad ji is a social activist, and he is also secretary of Tamil Nadu Jain Federation. He will share his experience with us today, and we will be enlightened with his work he has done on the ground and a lot of knowledge which he carries about Jain Dharma. Sir, over to you. And again, sorry, you have to wait a lot. Over to you, sir. Yeah, Sridhar Agai Nama. Jai Jinendra. Good evening, everyone. Am I audible? Yes, you are, sir. Yes. Okay. Thank you so much for Mr. Nitin Ji and his team, Jain Heritage Center team, for giving me this opportunity. First, I wanted to thank for another reason. Mr. Nitin has explained very well. He has documented. He has complete knowledge of issues pertaining to Karnataka and Tamil Nadu. And wherever he has not mentioned Tamil Nadu, the issues are similar. So first of all, I don't want to repeat all those things. Whatever he has listed, it's a very well listed document. The issues are same with the Karnataka and the Tamil Nadu. Okay, we have done certain positive way of tackling some of the issues. I would like to share that information with all. This Ahimsa work, probably most of the people are aware. It started in 2014 to go and see the Jain heritage monuments across Tamil Nadu, create awareness among our Tamil Jains, among the local non-Jain people and the government to protect the monument from vandalism, all illegal activities happening over there. So this is quite a successful event. This is every month, first Sunday, a group of people go there and create awareness about the Jaina monuments. This was started by Mr. Sridharan, and along with Sridharan, now a team of people, about 100 people every month go to see these sites. Professor Dr. Kanaka Achitadas is the president, and this team has covered more than 78 walks. So far, last 2 years, because of the COVID, got disturbed, and only 3 walks we could take in last 2 years. Otherwise, we have taken 78 months, 78 walks, covered about 220 heritage monuments, hillsides, and the abandoned idols, all included in this. About 120 abandoned idols explored or created, highlighted to the mass, otherwise, which was not known to many. And about 26 idols, Tirthankar idols, we have constructed a small shrine, small shelter costing about 1.5 lakh rupees. We have created 26 idols and regular worshipping taking place, but by the locals, not because most of the idols where we find there are no Jains living around. So we construct a small shelter and given to the local people so that it is well protected. And 4 heritage monuments declared as a protected monument by the State Archaeology Department in the last 6 years with our initiative for the Anantamangalam, Tondur, Naganurpatti, and Sodavandipuram. These 4 monuments are declared as a protected monument by State Archaeology Department. 1 monument, they have given a primary notification, and the final notification is yet to happen. There we have conducted during this COVID time, since we could not go to the sites, we have called the scholars from
historical background and archaeological department and literary people, the Tamil literatures, and conducted a weekly virtual walk every Sunday about between 3 and 5 online program calling the scholars and speak about this. This tomorrow is the 99th event going to take place. So next Sunday we are having a 100th program. So these are all created a lot of awareness among our Tamil Jains first, because less than 1 or 2% people only aware of all these Jaina monuments in Tamil Nadu. Yeah, this is the pathetic condition. And other Jains, the non-Tamil speaking Jains, mostly Svedamba Jains living in Tamil Nadu, also does not know about all this so much monument treasure or the Jaina treasures available in Tamil Nadu. We needless to say that other parts of India, very few knows about these treasures. Okay, so this created this last 6-7 years of Agisawa created so much positive information flow to the world, which created the many people look at Tamil Nadu as a Jaina tourist location, tourist destination. So people started coming in. So we would request that more and more people to visit all these monuments to then only these are protected. Okay. This what other than this, now the last 1 month it is happening. The new government after taking over, they are also focusing on protecting all the heritage monuments across Tamil Nadu. So they called the principal secretary of tourism, archaeology and museum, called the Jaina scholars and Buddhist scholars to create a Jain circuit, Buddhist circuit they would like to promote, and they would like to extend the facilities like providing roads, road infrastructure, lighting, toilet facilities, water facility, all those things. Whatever the point, whatever we ask for it, the government of Tamil Nadu now ready to provide. They have come forward. They called for a meeting, so I was one of the participants, and I'm compiling a list, and soon we are going to submit that. We hope that some positive will happen from the government side. This is one thing, and they would like to go a mile away, that they want our Jaina industries also get involved, like a public-private partnership. They are inviting the Jain organization who wanted to do a project as part of their spending, like corporate social risk. Under CSR category, they can do this protection of heritage monument, and government willing to take them as a partner, and they can do their advertisement of their commercial about their company and all in the monument. So this is one positive happen. So the madam has touched upon the Pathsala. So we started a Pathsala in one of the Jain temple, and last 2 years I saw that lot of the Jain Pathsala happening through virtual media by the Shastrijis, the learned Shastrijis from Todarmal Smarak Bhavan from Jaipur. They started conducting regular spiritual classes, philosophical classes, and there are many people are participating in it. Really, the last 2 years created good awareness among these philosophical classes like Pathsalas. And we conducted a summer camp for 4 years prior to COVID. Every year, 100+ students participated from the 6th standard to 12th standard in Ponnur Malai, where Acharya Kunkun Dev Tabo Bhumi. There we conducted a summer camp. More than 100 students every year participated, and they gained knowledge of our Jain Tirthas and what is happening around the world. And we, myself, along with Dr. Kanaka Ajit Das Jain, created a Jain temple tour guide, Tamil Nadu Jain temple tour guide, covering about 128 temples which are under worship, the Jinalayas under worship.
to cover in 7 days time. 7 days, if one can spend, and they can cover all the temples, where to stay, where to have a food, the Bhojansala, where the Dharamsala, there, all the informations are available in every village. The two people's name and number given, the Google link is given, so that now this was released in the Sravanabalagula Mahamastabhishek in 2018 by Acharya Devanandiji. So since then, and this is available in the almost all internet platform of all Jaina internet platform. If they search Tamil Nadu Jain Temple Tour Guide, they can get this up, or I can share with them. At the same time, we started working on the heritage tour guide, myself and Dr. Prakash Ajita Das, and it is about 70% work is over. We hope in another few months' time we would like to complete and release, so that it will give the complete picture of Jainism in Tamil Nadu. Pondicherry French Institute has released a interactive DVD covering about 470 monuments, and they have done nearly 10 years of hard work and research. That DVD is available with them, and anybody wants it, they can contact me, I can guide them. So there are more to add. There are 530 inscriptions of the Jaina inscription, recorded Jaina inscriptions in Tamil Nadu, about 22 Jaina monuments under the control of Tamil Nadu government, 48 Jaina monuments under the control of Archaeological Survey of India, 16 Jain temples under HRNC, the Hindu Religious and Charitable Endowment of Tamil Nadu government. So these are all the just some of the points I would like to highlight. And only one request, because the time is running out, and my humble request to Jain friends living in Tamil Nadu and other parts of India to visit Tamil Nadu and see all these kshetras, the temples under worship, and Jaina monuments, the heritage monuments, abandoned Tirthankar idols. The Tirthankar idols kept in the museum. There are Jain gallery in the Chennai Museum, Chennai Egmore, the second oldest museum in India. Chennai Museum has 42 Jain Tirthankar idols, stone idols, and 28 metal idols are there under their control. There are 6 more district museums also has Jain Tirthankar idols. So all those things, the one has to visit, see, so that these are all protected. And we are very small. The Tamil Nadu Jain population is less than 30,000. So, and nearly 50 to 60% of the people are living in Chennai. Other people are in the villages. So they cannot afford to protect all these monuments. There are about 500 monuments, Jain centers are there. So my humble request with the folded hands to the world Jains to visit Tamil Nadu and save these monuments. Thank you, Jai Jinendra. Thank you, Rajendra Prasad, sir. Then it was very enlightening to understand the current state of affairs, and particularly like with the efforts that have happened in the past 6 to 7 years in Tamil Nadu by yourself and your team, who have been striving hard to protect Jainism in Tamil Nadu. Thank you, sir. I mean, thank you for your valuable time. I think I think, friends, as you are aware, I was one of the last speakers to be speaking because of some organizational hazards and technical challenges. I think I was supposed to speak in the beginning. However, I think I would like to add a few of the other things that I wanted to speak. Friends, I just spoke about some of the challenges and what does they imply as well. Along with that, I would like to add a few more things that we should also be doing as a team, and what we from Jain centers have been doing. Whenever you come across any new places or any ruins, particularly in Karnataka, please do let us know, because we do have a bunch of experts, both Jains and non-Jains,
but who are all experts in inscriptions, who can always support us, read and interpret those inscriptions. And even if you find anything outside that, if you still have a doubt that if this inscription has been published or unpublished, please do let us know. We're there to support you, because over the past 20 years, what we have been working, and particularly over the past 5 to 7 years, we have been publishing a lot of unpublished Jain inscriptions. And myself, because of the support of some of the really doyens of the Kannada literature and the Jaina literature, we have been able to publish them. And we've also been a part of some of the initiatives taken by different bodies. For example, thanks to the initiatives of His Holiness Swastishri Charakirti Bhattarak Swamiji of Shravana Belagada, with a grant of around 1 crore Indian rupees, an initiative to come up with volumes of Jain inscriptions across Karnataka was taken up, and we have come up with, and it was taken up by Kannada University Hampi, which is a completely research university, and where around close to 2000 or 1900 plus Jain inscriptions have been published in 5 volumes. Thankfully, we were able to contribute in that with whatever little bit we were able to, and it was taken up under the editorship with Professor Hampa Nagarajaya sir being the honorary editor and Professor Devarkonda Reddy sir being the editor-in-chief. It has come out in Kannada. It has come out in 1 volume is come out in Hindi, and few others are coming out soon. They are under print. It is also coming out in English very soon. That is under print. I mean, it's a proud moment for us that we were able to partner with them. I think this is one of the best projects which I wanted to bring it forward. I think on a similar note, in Tamil Nadu, Mr. Ekambarnathan being the editor, I think they've come up with a volume of around 600 plus inscriptions in English, and that work is out of print. Except for these kind of initiatives, not much of work has happened in other parts of India, particularly in terms of documenting the Jain history. I think it's time for us as a community to come together and look at preserving the history of these inscriptions, because that is where your entire heritage lies. And also when it comes to temples, this is one particular thing which I wanted to bring it up to all your notice. In Karnataka, we have Virendra Hegdeji, who is leading the Dharmottana Trust, through which they have been able to renovate quite a bit of temples, all kinds of temples, and they have renovated close to 40 plus Jain temples. Then this is one of the very good projects which the rest of the Jain community should take up. Some of the organizations might want to approach the government organizations, the government bodies. In this case, the government of Karnataka approached Virendra Hegdeji to do this project. Now, it's up to the rest of the community, now that Virendra Hegdeji is part of the parliament, being the Rajya Sabha member. Probably we might want to approach the government of India to start similar initiatives, or probably Jain communities with rest of the country. You might want to approach your own state governments to come up with these kind of initiatives, which will help us take the Jain history and heritage and preserve them onto the next generations. Is something which I wanted to bring up before we conclude, because end of the day, it's all about Jain history and heritage, along with the population and this community that needs to be resurrected and preserved to the future generations. And we do have received quite a bit of good comments for both the Kannada and the English and Hindi sessions. And at the same time, we are always there with our dear friend Sanjay ji and Vishwa Jain Sanghatan, supporting them in all their initiatives. We worked together during the Mahamastaka Abhisheka.
even though we work on many other projects, please do let us know, because Jain Heritage Centers is there to support you even technologically, because we have been working on quite a bit of things. We have a couple of Google certified or more than certified. Some of our members, they work on mapping Jain temples across India. One of our very core members who has been there with us since 2005, the past 17 years. Whenever he puts up any edit on Google, it directly goes live, because he's done so many edits. He's added hundreds and thousands of temples and Jain places across India. Is mapped on Google. He's none other than Brahmanand Chipraji. Is part of our team. Like this, we have many of the other people who are there with us. We have people like Hampana sir, who is always there to support us. We have Devarkonda Reddy sir, who's authored the Jaina work, the Jaina inscription work. Because of his foresight, we are able to get it in Kannada and Hindi, because he said very clear, it should not be confined to Kannadigas. It should be spreading over to the entire India and entire world, for which we are able to get the Jaina inscriptions volumes in 5 different volumes. That is something, it's first of its kind that has happened in Karnataka, which I think we should always look at replicating it across India. I think these were a few things which I wanted to bring up. And also, any kind of information you need, we are there to support you, particularly about history and heritage and inscriptions in South India and any part of India. Let's make sure, before publishing anything, think and think. Think not twice, think 100 times before publishing anything, until and unless you don't verify and you don't give the credits, please don't publish, because it will not help Jainism. It might give any one of us a name for a month or two where we feel happy because we have good amount of comments and shares, nothing else. That is something which I wanted to bring up again before we conclude. I think due to lack of time, I think we were able to we were not able to have the panel discussion. Never mind, I think we were still able to have the thoughts of all our speakers. And with this, we will conclude this session. Namo Siddhana. Jai Jain.